wasting any more time. So first question, it's pretty simple, not a little bit. So a veterinarian wanted to determine the pedigree of a puppy. Pedigree meaning the genetics, where did it inherit what from, right? So 4 male adult dogs had to be considered as possible fathers. So he wants to determine who is the father, right? And the result, how does it want to do that? By using DNA fingerprinting. Now, what is DNA fingerprinting? So, this is your piece of DNA. You have double-stranded DNA. You already know that. Now, DNA is, if you zoom out, and guys, don't worry, I'll be discussing the concept, not just telling you out the problem. So all is cool. Huh? So DNA is double-stranded. What does double-stranded mean? What does it mean when I say DNA is double-stranded? Meaning it has 2 threads. So whenever you talk about a piece of DNA, it will have 2 threads. Each of these threads is going to be composed of small units joined end to end. So this one thread is deoxyribonucleic acid, and this deoxyribonucleic acid is going to be made up of deoxyribonucleotides, right? These are small units. Now, in between these small units, you have bonds, right? So these are phosphodiester bonds, right? So these bonds are called as phosphodiester bonds. Now, when you break these bonds, the deoxyribonucleotides go their separate ways. Now, how do we break these bonds? So as it appears, there's an enzyme, right? For everything, we'll have enzymes. So there's an enzyme called restriction enzyme. The reason we call them restriction enzymes is because these were discovered in bacteria. So there were bacteria which were, discovered by your the bacteria were very frequently infected by viruses, and these bacteria came up with a strategy to clip out, to kill those viruses. So these were restriction enzymes, right? You have various of them, like you have EcoR1, that's one of them, or you get SAM, and there are many others, don't worry about them. So restriction enzymes are of 2 types. They are endo nucleases. Now this should make sense. Nuclease, it will break down a nucleic acid. Endo, it will break it down on the inside, meaning this is where they clip. This restriction endonucleases clip on the inside. So that means there's a second variety, exonucleases. Exo, on the outside, they will clip from the end, right? So we have these restriction endonucleases that can clip DNA from the between, from the middle. So because 99.9% of the DNA that you have is similar. So this is you and this is Amitabh Bachchan. You are going to have 99.9% DNA as same, right? Now, but there would be differences. The differences would be because you have different alleles. Remember that you have different alleles. And what are alleles? If you have forgotten, different alleles meaning different recipes, right? And that means because of slight differences, the restriction enzymes, when they try to digest the DNA, to break the DNA, they will digest the DNA. They digest the DNA in a very specific manner.
What does it mean in a specific manner? That means they cut at specific points. They will not cut anywhere, right? They cut at specific points because there's only 99.9% similarity, meaning DNA of different people, right? DNA of different people will be dissected at different points. What does that mean? Let's take this DNA. So this is you and this is Amitabh Bachchan, right? So there are minute differences, and that is why the restriction enzyme cuts the DNA here in you, and the restriction enzyme cuts the DNA here in Amitabh Bachchan. So that means there are DNA fragments around this size, right? Those DNA fragments would look like that, and Amitabh Bachchan's DNA fragments would look like this, right? Now, what do you do with these DNA fragments? You can't see DNA, right? Okay, they are fragments of DNA, they are molecules. You can't see the molecules. So you make them run. How do you make them run? So how do you do all of this? So you take a cell, you first break a cell, you break the membranes, isolate the DNA. How do you do that? By using a specific set of solutions. You have various ways. One is by using phenol and chloroform, right? So you isolate the DNA and then you digest them using restriction enzyme. Now, this is once again your DNA and this is Amitabh Bachchan's DNA. Now, different DNA pieces will take different time to run across the gel. So this is a gel, and on this side you have the positive electrodes, and on this side you have the negative electrodes. The thing is, DNA is negatively charged. So all the pieces of DNA are attracted towards this end. But because of the different size, this big DNA will be slow. And the small pieces of DNA would be faster, right? So you get a print. So you get a print of differences in the DNA because of the differences in the sequence. This is one way of making or understanding the differences in the sequence. Okay. So in this whole method, what we were doing is we were understanding the differences in the DNA sequence, that 0.1% difference in the DNA sequence, by understanding or by visualizing the different pieces of DNA which were of different length because they were cut at different sections using the restriction enzymes. This is one of the way. In fact, this is the oldest way. Now the world has moved past it. We have different ways to do this and advanced ways to do this. But this technique was called as RFLP. Restriction fragment length polymorphisms. So by using the restriction enzymes, you create a print of DNA, right? So because you are made from the DNA of Papa and Mommy. So your restriction fragments
the fragments of DNA pieces that your DNA will have must come from Papa and Mummy. That means all the fragments that you have must be there in either Papa or Mummy, right? So let's come back to our question. The question is, Lily is the mother, right? And Sweetie is the puppy that you want to understand that the pedigree of. So all the restriction fragments in Sweetie must come either from the mother or from the father, right? So, okay, Sweetie has this, and that's found here, and that's found in Jim, Jack, and Jill. Okay, not a point of difference since this is already there in Lily. This fragment is already there in Lily. Not a point of difference, not important for us. These are important for us. Why? See, why I'm saying that that's not important, because it's already present in mother. So if it's found in father or not is not really helping us, right? Now, we are interested in fragments that's found in the puppy but not found in mother, because in that way they must come from the fathers. So this is an important one. And what else? This is an important one. And this is an important one, because these fragments are must come from fathers and not from mothers, right? So we can see Jim and Jam make all round perfect fits, right? Here we see Jam is a better candidate. Once again, we see Jam is a better candidate. And once again, we see Jam is a perfect candidate, right? So fight is between Jim and Jam. Jim and Jam, but while in this position, let me mark the positions 1, 2, 3, and 4. So second, third, and fourth means that you can have more fragments, right? So we confirm Jam is the father because these fragments are there from Jam. So the correct answer for this question would be Jam. Guys, a quick word. Please ensure that you like, share, and subscribe. Very importantly, subscribe to the channel, because the length of the videos that I can put up will depend on the subscriptions. I think before I have 100 subscriptions, I can only put up 15-minute videos. And I think after 100 subscribers, there's YouTube policy and whatever. So please ensure that you subscribe to the channel. I'll try to make the videos as long as possible and eventually turn them into 1-hour lectures, but I need subscriptions, guys. Okay. Also, one important thing, choice of language. So right now I'm using only English, right? Now I am going to give you 3 options, which you must reply in the comment section: English, Hindi, or Hinglish. So what do you prefer? Do you want me to pull separate videos in English and Hindi, or do you want a mix of English, or what, right? Okay, so that's the first video, and I think I'm out of the time, so I want to do more, but I think I can only upload 15-minute videos. So I'm stopping here and we'll continue in the next sessions. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Hey guys, hi, welcome to Sona Singh Biology. So well, कल हम इस सिंपल क्वेश्चन को समझ रहे थे और इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया. व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ लिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लॉजिक क्या है, ये सब भी समझ लिया. तो आगे आने वाले सारे वीडियोस में दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. We are going to talk about questions. We are going to try to solve them and also try to understand the concepts behind. ठीक है. Telegram Sona Singh Biology, Instagram Sona Singh Biology. ठीक है. You already know that. चलो शुरू करते हैं. Eastern and Western meadowlarks look almost the same. Inhabit the same areas. Area same है. Look almost the same. तो क्या क्या चीज़ें same है भाई? So morphology क्या होता है? External characteristic same है.
एरिया यानी जियोग्राफी सेम है, ठीक है। दे रिकॉग्नाइज देयर मेट्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज बाय डिस्टिंक्टिव कोर्टशिप सॉन्ग्स। डिस्टिंक्टिव अलग अलग, कोर्टशिप कोर्टशिप का मतलब है टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। सॉन्ग्स, तो ये क्या हो गया, कोर्टशिप क्या हो गया, इट्स बिहेवियर, राइट। कोर्टशिप सॉन्ग्स अलग हैं, सो बिहेवियर इज डिफरेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ प्री-ज़ाइगोटिक आइसोलेशन। अब ये आइसोलेशन, प्री-ज़ाइगोटिक क्या है, ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ते हैं स्पीसिएशन के बारे में। व्हाट इज स्पीसिएशन, नई स्पीशीज़ कैसे बनती है। इसके कई सारे हमने पढ़े हैं। हमने पढ़ा कि भाई नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है एक तरीका जिसमें कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ऐसे वेरिएशंस को एक्यूमुलेट होने देगी या होने देती है जिससे धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिफरेंट बन जाता है फ्रॉम द एंसेस्टर। सेलेक्ट किया गया नेचुरली बिकॉज वो एक एडवांटेज दे रहा था। स्पीसिएशन का एक और है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नाउ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इट्स वेरी सिमिलर माइनस द एडवांटेज। यानी कि यहाँ हम एडवांटेज की वजह से नहीं कह रहे, यहाँ पे एक एंसेस्टर था जिसकी पॉपुलेशन दो हिस्सों में बढ़ चुकी है फॉर वॉट एवर रीजन, किसी भी वजह से दे हैव आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेटेड बोले तो नाउ दे कांट इंटरब्रीड एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ वेरिएशंस, और ऐसे चलते चलते eventually they would become so different that they are now different species altogether. This is reproductive isolation. Now reproductive isolation किस तरीकों से हो सकता है। अब अगर आप वापस इस पैराग्राफ को देखो तो you can already identify at least 3 different ways: morphology, geography, behavior. अब प्री-ज़ाइगोटिक क्या है? प्री-ज़ाइगोटिक और पोस्ट-ज़ाइगोटिक आर वेज जैसे जिससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज हैपनिंग। प्री मतलब पहले, ज़ाइगोटिक ज़ाइगोट बनने से पहले, यानी ऐसे तरीके जो ज़ाइगोट को ही बनने नहीं देंगे, यानी ज़ाइगोट ही नहीं बन रहा। क्या क्या हो सकते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब जिस सराउंडिंग में इंडिविजुअल रह रहा है वो डिफरेंट है। तो मान लो देयर वाज अ बिग नेशनल पार्क, एक बड़ा सा नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क के बीचों बीच सड़क बन गई। ना सड़क की वजह से अब यहाँ के ऑर्गेनिज्म इधर नहीं आ पा रहे, यहाँ के ऑर्गेनिज्म इधर नहीं आ पा रहे। दे आर नाउ नॉट एबल टू इंटरब्रीड एनी मोर एंड हेंस दे विल, देयर इज अ चांस, नॉट दे विल, देयर इज अ चांस कि अब वो अलग अलग स्पीशीज बना लें। टेम्पोरल, टेम्प टाइम, राइट, दैट मीन्स द डिफरेंस comes because there is a different time of reproduction. For example, mating season अलग हो गया, ठीक है, कोई अलग अलग सीजन्स में वो मेट कर रहे हैं। टाइम ऑफ द डे अलग हो गया, कोई नॉक्टर्नल बन गया, वो रात में घूमता है, कोई डायरनल है यानी वो सुबह में करता है। तो they are reproductively isolated because of their time when they are active. Behavior, that means the way they are doing things is making sure that they only reproduce with a group of organisms. अब इधर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? They recognize mates of their own species by courtship rituals. Courtship rituals, songs, croaks, है ना, मेढक। तो ये सब बिहेवियर का हिस्सा है जिससे वो अपने चॉइस को चुनते हैं। मैकेनिकल का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे। सो द डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चरल बॉडी डिज़ाइन मेक्स इट डिफ़िकल्ट और अनसक्सेसफुल टू ब्रीड, राइट। अब ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डिफरेंसेस। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज गैमेटिक। दैट मीन्स गैमीट्स आर not choosing each other.
इवन दो एक का स्पर्म और एक का ओवम पास आ गए, दे आर इन द सेम हैबिटेट, दे हैव द सेम मेटिंग सीजन, उनका बिहेवियर ने भी चूज कर लिया, मैकेनिकली भी द पीनस कैन एंटर द vaginal opening, but the gametes deselect themselves, they reject themselves कि नहीं, these are not compatible anymore. तो these are pre-zygotic ways जिससे दो और एक population के दो हिस्से they would not be able to reproduce together and hence they would eventually diverge, धीरे धीरे अलग अलग हो जाएंगे. आप अगर प्री जाइगोटिक होता है तो पोस्ट जाइगोटिक भी होगा. पोस्ट जाइगोटिक मतलब वायबिलिटी, फर्टिलिटी और ब्रेकडाउन. अब कई बार इन चीज़ों को सेम समझ लिया जाता है बट दे आर नॉट. ठीक है ना. वायबिलिटी का मतलब है दैट रिप्रोडक्शन डिड हैपन, रिप्रोडक्शन तो हुआ बट आफ्टर द रिप्रोडक्शन हैपेंड द ऑफस्प्रिंग इज नॉट फिट टू सर्वाइव इन दी सर्वाइव और डेवलपमेंट. दोनों में से कोई एक चीज़ जो है हिंडर हो जाएगी. सो सर्वाइवल और द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग इज डिफिकल्ट और इज नॉट पॉसिबल. दैट इज वाइबिलिटी. रिप्रोडक्शन हुआ, जाइगोट बना, अब जाइगोट जो है डेवलप नहीं कर पा रहा सही से या सर्वाइव नहीं कर पा रहा इन्वायरमेंट में. ये आपका सैलामेंडर्स में होता है. दिस इज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्यू स्पीशीज ऑफ सैलामेंडर्स. व्हाट इज फर्टिलिटी? फर्टिलिटी में रिप्रोडक्शन चेक, सर्वाइवल डेवलपमेंट चेक, बट द ऑफस्प्रिंग इज स्टेराइल. अब इसका फेमस एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी पता है, हिनीज. व्हाट इज अ हिनी? इफ यू रिमेंबर, हॉर्स प्लस डंकी, राइट? सो यू हैव हॉर्स प्लस डंकी. सो हिनीज, आपके म्यूल्स, दीज आर फेमस एग्जाम्पल्स. फर्टिलिटी. अब ब्रेकडाउन क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब है रिप्रोडक्शन भी हुआ, सर्वाइवल डेवलपमेंट भी हुआ, देयर इज नो स्टेरिलिटी, दे आर फर्टाइल इन दी फर्स्ट जेनरेशन. फर्स्ट जेनरेशन जो है फर्टाइल है बट जो सेकेंड जेनरेशन है दे आर स्टेराइल. द सेकेंड जेनरेशन इज स्टेराइल एंड बिकॉज ऑफ द स्टेरिलिटी इन द सेकेंड जेनरेशन दिस कैन नॉट गो ऑन. तो इसीलिए डिफरेंट तरीके होते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करने के. गाइज आई नो कभी कल आप सोचते होगे दैट मे बी दिस इज टू स्लो, बट बिलीव मी देयर इज़ वन वे. एक तरीका ये है कि मैं आपको सारे आंसर्स फटाफट बता दूं और कहानी ख़त्म. बट इससे आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे और इसमें से कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने ट्रेडिशनली एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है. तो दैट इज़ वाई व्हाट आई एम चूजिंग टू डू इज आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चंस, गिविंग यू द आंसर्स एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट. तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A was ecological, B was gamete and C was mechanical, D was behavioral. आपका आंसर हो जाएगा behavioral. Now, thankfully we have more subscribers now, तो अब I can make longer videos. But guys, if you like these type of videos and if you want more, please subscribe. Right? The more the subscribers, the better it is. Right? That helps me actually and the channel obviously. Right? चलो, third question. अब देखो सिर्फ सुनना नहीं है, दिस इज़ नॉट अ प्रवचन. सो अटेम्प्ट द थर्ड क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो और फिर जाके रिज्यूम करना. लाइव सेशन तो है नहीं, रिकॉर्डेड है ना. सो पुश द पॉज बटन, सॉल्व करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो. और अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये कर लिया है. चलो, पेडिग्री चार्ट है फैमिली का, शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ डिसऑर्डर एंड द ट्रेस द ट्रेट. ना पेडिग्री चार्ट आपके जनरेशंस दिखाते हैं. जनरेशंस हम दिखाते हैं बाय रोमन न्यूमेरल्स 1, 2 एंड 3. इंडिविजुअल्स को आपका अरेबिक न्यूमरल से बताया जाता है. सो दिस गाय इज 1, 1, दिस गाय इज 1, 2. उसी तरह इसको बोलेंगे दिस इज 2, 7. ठीक है, ये एक तरीका है. नाउ सर्कल्स, सर्कल का मतलब है फीमेल, स्क्वायर्स का मतलब है मेल. ठीक है, अगर शेडेड है दैट मीन्स द प्रोजेनी इज अफेक्टेड. ठीक है, और भी बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, अभी छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं. सो हमें पता करना है डोमिनेंट डिसऑर्डर है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, क्या है. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स लिंक? हम जब टाइप्स नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में
विल टॉक अबाउट सेक्स लिंक्ड, और ये मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट इफ़ यू वांट डिटेल्स ऑन दिस टॉपिक आई विल talk about this in detail later on. Sex limited, sex influenced and sex linked. ये तीनों के तीनों are different types of non-Mendelian inheritance. Sex linked का क्या मतलब होता है? That the gene that we are talking about is on X or Y chromosome. Autosomal का क्या मतलब होता है? What do you mean by autosomal? ऑटोजोमल यानी ऑटोजोम पे है, यानी कि इट्स नॉट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स, इट्स ऑन सम अदर क्रोमोसोम. सेक्स लिमिटेड एंड इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. दैट मीन्स बेसिकली आइडिया ये है कि जीन तो है बट किसी एक सेक्स में ही वो इन्फ्लुएंस होगा. मतलब इवन दो देयर इज अ जीन फॉर दैट, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल्स के पास भी होता है बट इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ फीमेल्स में ही एक्सप्रेस्ड होगा. राइट इसके बारे में और डिटेल्स करेंगे बट लेटर ऑन. वापस आते हैं क्वेश्चन पे. ओके पहले तो डिटरमाइन करते हैं कि एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है. ओके अब देखो वाई लिंक्ड होगा, दैट मीन्स अगर एक भी मेल अफेक्टेड है तो उसके बाद सारे मेल्स अफेक्ट हो जाते हैं. राइट एक भी मेल अफेक्टेड है तो उसके बाद सारे मेल्स अफेक्ट हो जाएंगे. यहाँ ऐसा नहीं है, फीमेल्स भी अफेक्ट हो रही हैं. तो वाई लिंक्ड तो है ही नहीं और ऑप्शन में भी नहीं दिया. दैट इज़ गुड, इट्स नॉट वाई लिंक्ड, बहुत अच्छी बात है. नाउ जहाँ भी आपको ऐसा दिख रहा है, वेर एवर यू सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन दी ट्रेट एज टू विच सेक्स हैज़ इट, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी सेक्स लिंक्ड, चाहे एक्स या वाई. तो ये तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि देखो आपका मेल्स इज 5, फीमेल्स इज 3. ठीक है तो यहाँ में साफ साफ दिख रहा है कि ये तो पक्का कुछ ना कुछ तो सेक्स लिंक्ड ही होगा. ठीक है तो ऑटोजोमल को हम आउट रूल कर सकते हैं. कभी काल रेशियोज बहुत क्लोज होते हैं. अगर 4:3 होता तो ऐसे आउट रूल नहीं करते, हम उसको एग्जामिन करते. ठीक है अब चलो एक्स लिंक्ड है तो अब अंडरस्टैंड करते हैं कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है. ठीक है नाउ थोड़ा सा क्राउडेड होगा बट क्या करें, है ना. ओके लेट मी इरेज अ फ्यू थिंग्स. उससे क्या होगा कि आपका क्लैरिटी बनी रहेगी. ओके नाउ दिस पर्सन इज अफेक्टेड, राइट, दिस पर्सन इज राइट नाउ अफेक्टेड. अब मेल इसके पास जो है y यहाँ है और x यहाँ है. राइट इट शुड बी रिटन द अदर वे, XY. तो एक x तो पक्का पक्की डिफेक्टिव है. राइट बट इससे हम कुछ वी कांट एज्यूम एनीथिंग राइट नाउ. राइट बट दिस गाय इज अगेन राइट. अब देखो दिस पर्सन इज नॉट अफेक्टेड. अगर ये डोमिनेंट होता तो ये भी अफेक्ट हो जाती. राइट अगर ये डोमिनेंट होता तो ये भी अफेक्ट हो जाती, पर ये डोमिनेंट तो नहीं है. इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं कि ये डोमिनेंट, देखो ये भी हो सकता है कि ये अफेक्ट नहीं होते हुए भी 3 का 10 अफेक्टेड है. मे बी दिस पर्सन इज पासिंग डाउन द डोमिनेंट बट ये भी अफेक्टेड नहीं है. राइट अगर एक्स लिंक्ड है और ये बंदा अफेक्ट नहीं है 2 का 3rd, इसका क्या मतलब है कि दिस इज ही इज नॉट कैरिंग द जीन. वो अलील कैरी नहीं कर पा रहा. वाई? बिकॉज इसके पास तो एक ही कॉपी होती ना. तो ये जो अफेक्ट दिख रहा है, दिस अफेक्ट मस्ट कम फ्रॉम द मदर, एंड बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द मदर दैट मीन्स इट हैज़ टू बी रिसेसिव. तो आपने यहाँ से ही देखकर पता लगा लिया कि वो रिसेसिव होगा और एक्स लिंक्ड होगा. तो करेक्ट आंसर होगा बी. तो आपको पहले डिटरमिन करना है सेक्स रेशियो. सो स्टेप्स क्या होने चाहिए कि सबसे पहले सेक्स रेशियो देखो. ठीक है उसके बाद आप देखो कि अगर सेक्स रेशियो डेफिनेटिव निकल गया कि डिफरेंस है, दैट मीन्स ऑब्जर्व डोमिनेंट है या रिसेसिव है. अगर रिसेसिव हुआ
तो जेनरेशन स्किप करेगा। अगर रिसेसिव हुआ तो जनरेशन स्किप करेगा। क्यों स्किप करेगा? बिकॉज फीमेल को अफेक्ट होने के लिए 2 कॉपीज चाहिए, मेल्स इजिली अफेक्ट हो जाए। ठीक है, अब ये एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पूछ लिया है विच ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, तो देखो बहुत सारे नाम तो मुझे भी याद नहीं रहते। तो दिस इज क्लेमाइडोमोनास, ये है आपका वॉल्वॉक्स, एंड दिस लिटिल गाय हियर इज एसिटाबुलेरिया। ठीक है, ये आपका सिंगल सेल्ड होता है और दिस इज अ सिंगल सेल एल्गी एंड इट्स रियली बिग। तो करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें कुछ वो नहीं है, थोड़ा सा वैसा बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी लंबा हो गया और आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, तो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस 5th क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एज अ होमवर्क और इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बता दो। ठीक है, सो ए बी ऑप्शंस आपको इधर ही दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 5 का ए बी ये रहा एंड सी डी ऑप्शंस ये रहे आपके। ठीक है, सो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। फिर कोशिश करेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का एटलीस्ट। ओके, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड शेयर बटन, अपने दोस्तों को शेयर करो एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यू ऑलरेडी नो सोना सिंह बायोलॉजी, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।